Hi, let's continue with the banking and the banking job related informations. By the way, these details I'm providing is with my experience in the banking field for the past 20 years. Yes, in retail mostly and the commercial banking, corporate banking and commercial banking. So I've made two videos with respect to the what are the functional areas in a banking job. You can watch that. This particular video is about a detail about what is a person in a front desk will have to do. What's a front desk? Now I get a job in a bank. I'm speaking about a private bank. More or less, it's the same thing in the government banking as of now. So what happens? So I get a job. I go to the branch. There's a branch manager at the head. Then you have the operations head, which is reports to the branch manager. Under the operations head, you have various staff. So one of the staff would be the front desk who's handling and discussing about account opening. There'll be one of the staff who is a teller or cashier who collects and gives cash to the clients, and a few more help. There'll be two cashiers, or depending on the size of the branch, there will be 2 to 3 front desk officers. Now, what is the role of the front desk officer? Number one is whenever there's a client is walking in, asking him or her, how can I help you? And then they tell about their requirement. Either it could be account opening, or it could be fixed deposit opening, or they have a check deposit, or they have a query or question. उनको कुछ डाउट होगा कि मुझे मेरे अकाउंट में मुझे ये पता नहीं है, ये पता चाहिए. सो ओवरऑल, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरी, अगर आपका जिम्मेदारी आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक डिपॉजिट, तो आप उनको एक्सप्लेन करके मदद करोगे. हो सकता है कि आपके अंडर में फिर अकाउंट ओपनिंग और फिक्स डिपॉजिट आपके अंडर में नहीं, कोई और कलीग, कोई और आपके पार्टनर देखते रहेंगे, तो उन्हें उस तरफ में डाइवर्ट कीजिए. अभी एक अकाउंट ओपनिंग टीम के पास आता है, सो फ्रंट डेस्क ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ अकाउंट ओपनिंग, he will take the form, and there are procedures laid on by RBI and the branch and the bank specifically. So we club together, there's a series of requirements. वो आप क्या अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ें आप बताते हैं. फिर उसके बारे में डिटेल. सो ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी? आप जब ज्वाइन करते हो कोई बैंक में, यानी बैंक में ये ज्वाइनिंग, आपको एक इंडक्शन, एक इनिशियल ट्रेनिंग होता है. एक दिन 2 दिन डिपेंडिंग अपॉन कौन से बैंक में है, आपको एक जनरल डिटेल्स मिलता है. उसके बाद फिर आपका ऑन द जॉब में ही ट्रेनिंग होता है. जी हाँ, इट इज़ योर एक्सपीरियंस, योर वर्क, योर लर्निंग हैपन्स ऑन द जॉब ओनली, एंड दैट्स हाउ यू लर्न. एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिकल. सो डोंट वरी अबाउट व्हाट द customers will say or what will happen. It's a learning curve, so don't worry. Understand, write it down. Yeah, that's another point, is you can write down, since you're a newcomer or joining new to the bank, you can write down what the customer wants. Then you can go to the expert. You have your colleagues, senior colleagues, आपके seniors रहेंगे वहाँ पे, उनसे पूछ सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है. And then finally, if you have more doubt, you have your operations head who is master in all the areas. And then beyond that is something is, if he is also busy, you can very well approach the branch manager. Yes, the private bank, or the modernized new setup, it's very friendly to have a discussion with your colleagues, your seniors. They're very open, and उस हिसाब से then you explain, come back and tell the customers. Same way with goes to a fixed deposit. The fixed deposit is also, what are the procedures you will learn over the period of time, or colleagues are there. So front desk officer का what is the work, क्या है उनका रोल? नॉर्मल चेक डिपॉजिट, हैंडलिंग क्वेरीज, कस्टमर्स के क्वेरीज हो गया, डेबिट कार्ड नहीं चल रहा और डेबिट कार्ड नया देना है, चार्जेस, कुछ चार्ज लग गए हैं, चेक डिपॉजिट हुआ नहीं है, हमारे अकाउंट में देखना है,
फिर अकाउंट ओपनिंग हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। सो जो भी हम लोग, आप और हम जो भी हमारे माता पिता के साथ बैंक गए होंगे, एंड हमने देखा होगा कि क्या बैठ के जो फ्रंट डेस्क में जो लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, तो उस हिसाब से ये वेरी प्लेन वर्क होता है। सो दैट्स द डिटेल्स अबाउट अ फ्रंट डेस्क ऑफिसर। थैंक यू।